आज हम लोग सीएमए फाउंडेशन का मॉडल क्वेश्चन पेपर स्ट्रेट टू सॉल्व करेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट का फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन। पहला क्वेश्चन, which article of Constitution of India deal with inconsistency with between law made by parliament and law made by legislature of state? Article 254 बुक का क्वेश्चन है। प्रपोजल इज मेड व्हेन, एक प्रपोजल कब बनता है, कॉन्ट्रैक्ट से सवाल है ये आपका इंट्रोडक्शन से है। जस्ट सेकंड, ये आपका चैप्टर 1 से है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। क्या नाम है, प्रपोजल इज मेड व्हेन, when one person signifies the willingness to do or not to do something to obtain the assents of other. C. Sales of Goods Act होगा सेक्शन 19 of Sales of Goods Act deal with passing of property of specific or certain goods। ठीक है। फोर का a bill from negotiable instrument act, जहाँ bill आ गया NI negotiable instrument, a bill drawn accepted or dishonored for the consideration, ठीक है, इज नोन एज। फिर एक ऐसा बिल ड्रॉ करना, एक्सेप्ट करना, एंडोर्स करना जो फॉर कंसिडरेशन के लिए हो, उसको क्या बोलेंगे। इतना इजी क्वेश्चन था आज तक, तो क्या बोलेंगे। जेन्युइन बिल। 5 नंबर, इन विच मेथड is the decision of third party generally binding on the disputing party। अच्छा, ये भी आपका चैप्टर 1 से है। आर्बिट्रेशन। चैप्टर 1 से है। During a national emergency, essential goods with price tags must be sold at the marked price due to, किस वजह से, अगर कोई राष्ट्र में इमरजेंसी लगे तो एसेंशियल गुड्स प्राइस टैग पे बिकेगा। मस्ट बी प्रोडक्ट जो प्राइस टैग वाला जितना भी गुड्स है एक मार्क प्राइस पे बिकेगा। उसका रीजन क्या है, किसके चलते। डी, चैप्टर 1। सेवन नंबर, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 ऑफ सेल्स गुड्स एक्ट होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा, क्या क्या है कि under section 2 subsection 4 of sales of goods and delivery, the order enable a person to obtain delivery on payment of price is deemed as a document of title। ठीक है। which of the following is true। 8 का सी, the considered decision uniquely bind under all circumstances, नहीं ऐसा नहीं है। judicial court control the entire
consideration process नहीं. The settlement is binding only if both the parties accept. हाँ. C. Next. A gave a watch as a gift to B on his birthday. Later, A demand watch back, claiming that there was no consideration for gift in this case. अच्छा. A cannot recover the watch because complete gift are valid even without consideration. अच्छा ठीक है ठीक है. और भी ऑप्शन हम लोग एक बार पढ़ेंगे. ठीक है. A can recover the watch because the verbal gift are not valid. नहीं, गलत बात है. verbal gift भी valid होता है. A can recover the watch because the gift require monetary consideration. नहीं, gift पे monetary consideration नहीं होता है. B must pay for the watch to keep it. नहीं, वो तो gift था. तो ये देखो इजी क्वेश्चन है. अगेन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो चैप्टर 1 से था. The doctrine of credit is not applicable since for good sector. Doctrine of credit किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है. Doctrine of credit is not applicable where buyer rely on the skill and judgment of देखो doctrine of credit क्या था. Let buyer be aware. And अगर buyer कोई सामान खरीदते वक्त उसको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, completely skill और judgment of the seller पे डिपेंड है, तो फिर यहाँ पे तो केवल रिक्रूटर काम नहीं करेगा. अच्छा. है नहीं. Negotiable instrument. If an instrument is made, may be constructed either as a promissory note or bills of exchange, it is ambiguous instrument. Instrument क्या है ना? Instrument. Which of the following is not objective of IRDA? IRDA का full form क्या है? Insurance Regulatory Department Authority of India. Nationalize the private insurance company. इस ऑब्जेक्टिव से निकला था. When a check is payable across the counter of a bank is called. When a check is payable across the counter of a bank, it is called cross check. नहीं नहीं सॉरी काउंटर पे पेमेंट हो रहा है ना. जैसे when a check is payable cross. ठीक है, मैं सिर्फ अक्रॉस को फोकस किया था, क्रॉस चल रहा था. ठीक है. काउंटर ऑफ अ बैंक इज कॉल्ड ओपन चेक. Which of the following statements true regarding the promise to pay a time bar debt? ठीक है, ये तो हमारा हो गया था चैप्टर 1 से. नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट से.
Which of the following statement is true regarding the promise to pay a time bar debt? What will that see? 15. Unpaid seller can exercise his right of resale of goods. कब वो अपने राइट यूज करता है जब सामान उसे पास हो, करेक्ट? भले प्रॉपर्टी वायरल है ना, हो चुका है, ठीक है। और बैंक का अगर नहीं हुआ है तो फिर रीसेल कैसे हो रहा है? ठीक है, 14, 16। Negotiable payment tax again. If a minor draw, endorse, deliver, or negotiate instrument, such instrument bind. If a minor draw, endorse, deliver, negotiable instrument. Such instrument bind all the parties to the instrument except the minor. Minor को छोड़ के सब, ठीक है। Money bill is introduced in the House of Parliament, Chapter 1. Lok Sabha. Sorry. एक ही नंबर। A corporation can be party to the negotiable instrument if it was also taken negotiable instrument at the question है। कह रहा है corporation can be party to a negotiable instrument if authorized by its article of association. Corporation will company body corporate. For a valid contract of sale, delivery must be all of these ऐसा फिर दिक्कत नहीं है। Actual delivery, symbolic delivery, constructive delivery, ठीक है। शेयर को एग्जाम्पल में एक बताया हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट आपके घर सामान ला के देता है, फ्लिपकार्ट का सामान ऑर्डर करता है तो वो एक्चुअली तो ठीक है। दूसरा सिंबॉलिक डिलीवरी, जैसे क्या होता है कि आप बाइक खरीदे, ठीक है, या फिर आपको को मैन ऑफ द मैच में एक बाइक मिला एज अ विनिंग, ठीक है, क्या पिक्चर। तो बाइक तो आपके हाथ में नहीं दे सकता, तो बड़ा सा कि पेपर कटआउट देता है ना,
तो वही पेपर कटआउट क्या सिग्नल है कि भैया आपको डिलीवरी हो गया बाइक। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जहाँ पे याद रखो, जहाँ पे मूवमेंट ना हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स ना हो, बट प्रॉपर्टी यानी कि ओनरशिप चेंज हो जाए, ठीक है, उसको कहते हैं। क्लियर है बात? 20, a minor enter into an agreement during his minority. Upon the attaining the majority, he want to ratify the agreement. Which of the following is legal? Correct. कह रहा है कि एक माइनर बचपन में कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब जो माइनर था, अब वो जब बड़ा हुआ तो सारा कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करना चाहता था, ठीक है। तो which of the following is he can ratify the old agreement without any consideration? नहीं, ऐसा नहीं है, he can ratify the agreement only through court order, नहीं। 3 नंबर, he must be a new agreement with fresh consider, तो सबसे नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। X detain Y car unlawfully and Y tell he will return if only if Y will agree to sell him a plot of land at half price. Y agree and sign the contract under the protest is coercion और नहीं तो क्या भैया। यस, ये coercion है, डरा के धमका के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Who among the following cannot cross a check? ड्रॉर, होल्डर, बैंकर या फॉलोअर। कौन चेक पे क्रॉस नहीं कर सकता? फॉरेनर, ठीक है। A share certificate is a document showing title to the goods, ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है, टाइटल ओनर। Which of the following is true about the pony right to the extraordinary expenses? ये भी कॉन्ट्रैक्ट से है। Which of the following statement is about the pony right to the extraordinary expenses? The pony can recover the extraordinary expenses but cannot retain the goods for them. सामान अपने लिए नहीं रख सकता पॉली। हाँ, उसमें जो भी उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा लगेगा वो तो उससे रिकवर किया जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये तो बता ही रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से है। क्या बोल रहा है, अंडर सेक्शन 118 of the negotiable instrument act is it is presumed until the contrary is proved that that every transfer of a negotiable instrument was made। Mhm.
Before its maturity to 26 months. Agency based total arise when? ठीक है? Contract. Agency based total arise when? When the principal leads a third party to believe someone is agent. जब आप किसी थर्ड आदमी को एक्सेप्ट कर ले तो क्या ठीक है एज एजेंट मेरे पास काम करेगा या उसके लीड्स को आप एक्सेप्ट करते हो ठीक है उसको 27 नंबर द प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट pass to the buyer at a time the contract is made even if the property in a specific goods in a deliverable state passes to the buyer at the contract is made even if the payment is to be made later तो पैसा बाद में दे ठीक है 28 नंबर मेमो डेट रूल क्या बोलता है नो बेटर टाइटल देन द सेलर हेड हाँ सेलर से अच्छा टाइटल यानी कि ओनरशिप और किसी के पास नहीं हो सकता है 28 का सी सब एजेंट अपॉइंटेड बाय डायरेक्टली नहीं अपॉइंटेड ठीक है सब एजेंट किसको कहते हैं अपॉइंटेड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द एजेंट जो एजेंट के अंदर काम करता है उसको कहते हैं 30 a check must be present to the bank within how many months from the date if drawn as per the current RBI guideline. Okay. 3 महीना. What is the legal effect of rescission? Sorry, rescission. Discharge of contract. Contract खत्म हो जाता है ठीक है मैंने यहाँ से चैप्टर का नाम लिखना छोड़ दिया था एक बार लिख देता हूँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ठीक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट a check must be negotiable through that contract act. Corrective commits with regard to the past behavior. अच्छा business communication है negative feedback. Bills of lading either bills of exchange. Article if a material alteration is made without the consent of other party become
कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? मटेरियल अल्टरेशन, मटेरियल में इम्पोर्टेंट, आप कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट चेंज कर दिए हो बिना सामने वाला पार्टी से डिस्कस किए, क्या हो जाएगा? वॉइड। कहाँ से है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। बिल ऑफ लीडिंग, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बिल ऑफ लीडिंग, डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू द गुड। नेक्स्ट 35, business communication help in establishing dash when marketing. Help establishing professionalism, ठीक है? रूडनेस नेगेटिव और कैजुअलनेस के चलते तो फिर भैया बिजनेस चलेगा ही नहीं। फीडबैक इज नीडेड इन विच वे? कम्युनिकेशन, फीडबैक किस तरीका से होता है? वन वे, टू वे, ठीक है, या बोथ ए एंड बी? ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन का है, ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन का है। A negotiable instrument can be transferred, and I negotiable can be transferred by delivery or endorsement and delivery. An agreement which restrict a person's freedom to marry. अच्छा, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है ये, कि आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो किसी पर्सन के फ्रीडम के लिए, आप किसी से शादी नहीं करोगे, ठीक है, या फिर आप मेरे बस में शादी करोगे, ये क्या है? ऐसे एग्रीमेंट वॉइड है, वॉइड। अनपेड सेलर means a seller, ठीक है, to whom the whole of the price not been paid, who has been fully paid, who refused to deliver the goods, or who cancelled the contract. So unpaid sales जिसको कहते थे, जिसको सामान का 1 रुपया भी शायद बाकी है, तो अगर 1,000 का सामान है तो 999 मिल गया, बट 1 रुपया भी बाकी हो, ठीक है, जिसको पैसा प्राइस नहीं पेड हुआ हो। Mr. A and Mr. B belong to the two distinct cultural backgrounds. Mr. B believes that his culture is superior compared to culture of Mr. A, and this phenomena is known as, इसको कौन सा phenomena कहते हैं? A promise B to pay if it is rain on Monday, B promise to pay A if does not rain। बताओ ये क्या हो रहा है? Wagering agreement, सट्टा खेल रहे हैं लोग, कॉन्ट्रैक्ट। The cost incurred with the customer via video call has been increased। In case of future goods, ownership
In case of future goods, ownership passes when the contract is signed. नहीं, ये नहीं है। Passes after the part is नहीं, pass immediately तो नहीं होता फिर। हाँ, तब तक गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हो जाता या नहीं बन जाता। एग्जाम्पल हम क्लास पे देते हैं कि जैसे हम लोग रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाते हैं या फिर रॉल्स रॉयस खरीदने गए कभी लाइफ में, ठीक है, भगवान के दिन सबके लाइफ में, वहाँ पे क्या होता है कि पहले हम लोग को एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब एग्रीमेंट टू सेल करना पड़ता है, देन हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। मेथड ऑफ डिलीवरी मैसेज इज नोन एज, जिस मेथड के हमारा सही हमारा सेल्स ऑफ गुड्स सेट का था, जिस मेथड के सहारे हमारा मैसेज पहुंचाया जाता है नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, चैनल, माध्यम। एक कॉन्ट्रैक्ट विथ एलियन फ्रेंड इज, बताओ बताओ। वैलिड एंड इनफोर्सेबल, एलियन एनिमी था, यहाँ फ्रेंड दिया हुआ है, ठीक है। बिजनेस अटायर रेफर्स टू क्लोथिंग, अटायर नहीं होता है क्लोथिंग, आउटफिट। affirming comment, business communication, business communication with regard to the future behavior is called, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव में affirmative दे देता, affirmative लिखता है। 48, a person contract to deliver a part of a specific crop of potatoes, the potatoes were destroyed by blight through no fault of the party, the contract is, क्या हो जाएगा, किसी भी, क्या उसमें उनका भी गलती नहीं था किसी कारण से, ठीक है, डिस्ट्रॉयड हो गया। Participants involved in the process of communication must be, जजमेंटल होगा तो नहीं चलेगा भैया, open minded, information overloaded is when listener get too much information. सारी तबीयत खराब है करके इतना दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग स्टेट टू भी कंप्लीट करेंगे।